See the relationship in the real world between Shahrukh Khan and Kajol. I'm talking about the real world relationship. It is so beautiful, right? But we hardly talk about it. And we just talk about their perfect pair in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge and other movies. But because they share a amazing platonic, pure, clean, friendship wala relationship off the screen, and hence we see that amazing chemistry on screen. But nobody talks about it. The media never talks about it. And maintaining the family responsibilities, Shahrukh is, well known as a family guy. Kajol has her own family, yet they both share an amazing platonic relationship. But these pure, clean relationships based on pure friendship, उसमें मसाला नहीं है ना, उसमें कोई गंदगी नहीं है, और इसलिए media doesn't talk about it. It is boring for them. बिकता नहीं है. And hence I took up this topic. Leonardo DiCaprio and Kate Winslet, two amazing actors from Hollywood, they share such an amazing platonic relationship. You can watch their interviews, and I feel proud about these relationships because they really help you in your professional life. Okay, but आजकल हुआ क्या है कि we have started segregating between friends and clients, as if clients are not human beings. देखो पहले बहुत हम सबको घर पे बुलाते थे खाना खाने को, अभी वो काफी कम हो गया है. It is restricted only to our relatives, the blood relatives on festivals and other occasions, and very close friends. Why are we skeptical to invite our clients at home for lunch and dinner? I don't understand. The fact that you have chosen him as a client, that means he's not a bad guy. Okay, कुछ illegal धंधा कर रहा है, तो why is he your client? First of all, right? You should fire him. And if at all he qualifies as your client, what's harm in converting him into a friend? In fact, I would say if he becomes your friend first, there is a high chance that he'll become your client. Not because you are selling something, but because out of love and affection to help you, he will, take whatever you offer. Dhirubhai Ambani was very good at it. Yeah, he just made friends. Okay, and business clients, they happen to him as a byproduct, as a side dish, as a side effect. I'm going to share a few of the anecdotes which got refreshed while I was reading this book, Platonic. See, we know that social connections are so important. We are not made to live in isolation in a cave. The way we have evolved in last 5 lakh years, we need social connections. We are social animals. But not everybody is good at making and keeping friends. Some are. college group में ऐसा लड़का होता है, पूरा college उसका दोस्त होता है. Because he's flashy, he's extrovert, he's charming, he's humorous, he or she. Everybody wants him or her. ऐसा होता है ना, एक दो बंदे ऐसे कॉलेज में रहते हैं. I used to feel jealous about that guy because everybody wanted him. Yeah, and no wonder he becomes the captain of the college, the main head student guy. So off late, I met a friend, my old friend. We had lost touch with each other for many years. So somehow he found my number and contacted me, and he was happy to see my growth as Booklet guy. And he helped me to recollect one incident that happened when we were teenagers. And so I was good at sports in general. And so, जो अच्छा खेलते हैं ना, तो उनको कैप्टन बनाते हैं. गली क्रिकेट में कैसे होता है, तो यूजुअली मुझे कैप्टन बनाया जाता था, और कैप्टन का काम रहता है टू चूज द प्लेयर्स, राइट, चूज द फ्रेंड्स. तो एक मैं चूज करूंगा, फिर सामने वाला कैप्टन एक चूज करेगा, फिर मैं चूज करूंगा, वो करूंगा. गली क्रिकेट में टीम्स ऐसे बनाए जाते हैं. एंड ही टोल्ड मी दैट अमृत, I knew that somewhere you will become a social entrepreneur. I said, how can you say this? मुझे पता नहीं था कि मैं एक social entrepreneur बनूंगा. तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो? So he shared this anecdote with me. Do you remember कि जब हम क्रिकेट खेलते थे और जब हम कैप्टन बनाते थे तुमको, you used to select the weakest players.
Whereas most of us, हम क्या करते हैं, बेस्ट प्लेयर्स को पहले चूज करते हैं ना, ताकि हम जीत जाएं, है ना। सबके, किसी की बैटिंग अच्छी होती है, किसी की बॉलिंग अच्छी होती है, कौन तगड़े प्लेयर्स रहते हैं, कोई वीक रहते हैं, उसको हम लिंबू टिम्बू बोलते हैं। वो एंड में जबरदस्ती कोई बच गया तो उसको ले लेंगे। आई यूज्ड टू डू द रिवर्स। आई यूज्ड टू सिलेक्ट फर्स्ट द वीकेस्ट प्लेयर्स, बिकॉज फॉर मी winning the match was not the primary goal. It was an opportunity as a leader to help these weak players learn batting, bowling, and fielding. If I assume that I am little better than them, and that opened my eyes. I had forgotten this quality, and then I got convinced. Yes, there was somewhere a social entrepreneur in me since ages, and finally I'm here as a social entrepreneur. Uh, See, howsoever professionally competent you are, if you are not a nice guy, with full of humility, no arrogance, सर पे बर्फ और मुंह पे शक्कर, yeah, courtesy, kindness. If these things are missing, then you are a failed leader. I call this as character qualities, yeah, and not competence. Competence is amazing at Excel sheet, amazing at selling the products, your financial products. You know how to handle social media and email list. You're very good at replying to emails. वो सब competence है. I'm talking about the character related qualities. And 99% of leadership failures are character failures. You check out all the leadership failures in the world, they are character failures, and not because they lack competence or knowledge or other technical skills. For example, I am approached by many authors. In fact, authors across the world send me their first copy of their book with a hope that I'll read them and take things forward. Now, there is one guy who sent me his book, and it was pathetic. The book was pathetic. But the person was so nice to us that I embraced him with wholeheartedly. Yeah, and he's one of the close friends to me now. Whereas, exactly opposite, कुछ authors के books इतने अच्छे हैं, but our doors got closed for them because they were very arrogant, egoistic people. देखो, मतलब author अच्छा है, इंसान अच्छा नहीं है. I am not there for them. और author बुरा है, पर इंसान अच्छा है, and he's one of my close friends. So I think this is a very good example where we give too much of importance to competence over character. Yeah, the basic qualities which were part of our Indian civilization, courtesy, humility, non-arrogance, they are more important than the technical skills and chat GPT and SEOs and PowerPoint presentations. है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब खराब है, ये important है, but उस चक्कर में हम ये सब भूल गए हैं. The basic values which were taught to us in Bal Bharati text. So friendship is not about big things. Friendship is not a big thing. It is a million small things. और टिपिकली दोस्त लोग बोलते हैं ना, अरे अमृत तू रात को 2 बजे भी फोन करेगा ना, मैं तेरे लिए हाजिर रहूंगा. नो, ये नहीं चाहिए. जब कुछ बड़े बड़े ट्रेजेडीज हमारे लाइफ में होते हैं, तो हमारे फैमिली खड़ी हो जाती है हमारे साथ. तभी फ्रेंड्स की इतनी जरूरत नहीं होती है. आप बोलोगे ऐसे कैसे? हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो फ्रेंड्स चाहिए ना. ठीक है, दैट इज एन एड ऑन. हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो फैमिली हमेशा हमारे साथ रहती है, राइट. फ्रेंड्स चिप इन व्हेन यू नीड स्मॉल थिंग्स. कि अरे यार वो अरे मेरा मोबाइल खराब हो गया है, तेरे पास कोई स्पेयर मोबाइल है क्या 2 दिन के लिए? अरे वो आते आते तुम आ रहे हो तो मेरे लिए एक्स्ट्रा अंडे लेके आओगे क्या? मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, आज बाई नहीं है ये, एंड मेरे इधर का शॉप क्लोज हो गया. नो, दीज ऑल स्मॉल थिंग्स. और वहां पे इफ कंसिस्टेंटली द गाय सेज नो, then we start losing faith in the friendship. So friendship is not a big thing. It is about a million small things. And suddenly you say, oh, I like him. He's a great friend. He's my best friend. You can't pinpoint on a particular event. इसकी वजह से मेरा best friend है. All right. It's all about the million small things that we do for each other. Yeah. For example, पिछले हफ्ते 2 दिन के लिए my cook was absent. और मैंने फरीद को रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा अम्मी को बताओगे क्या एक्स्ट्रा खाना लेके आओगे मेरे लिए.
And he did. No wonder we share some amazing relationship on a platonic basis. Uh, I think people who struggle uh, to create deep relationships or deep friendship, there are some simple things that if you practice, you can win some great friends. You can also read a book called How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Again, it's a timeless epic, one of my favorite books. And so I used to feel that friendship is all about helping each other. Yes, no doubt about it. वो मैंने अभी बोला कि छोटे छोटे हेल्प एक दूसरे के लिए. But of late, what I have discovered is, and thanks to the book, more than helping, physical help, not money help, other than that. जब हम वेल हेल्प बोलते हैं तो हमको लगता है पैसों का हेल्प. नो, टाइम का हेल्प भी होता है, स्किल का हेल्प भी होता है. जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिए कुछ कि आते आते तुम मेरे लिए स्टेपलर के पिन लेके आ सकते हो क्या प्लीज. ये हम फ्रेंड्स को बोलते हैं. बट मोर देन दैट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज लिसनिंग. Just listening empathetically to your friends who are in pain is bigger virtue than a physical help. And this is not an overstatement. The whole world wants to talk, 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 and talk, and nobody is there to listen. Yeah. You know why I go to bed as the most satisfied person every night? It's because I'm heard by the world. You guys come to me and listen to me for hours. I'm so lucky. And thanks to you that I'm being heard. My voice is being heard by you guys. People want to listen to me. पर ये सबके साथ होता नहीं है. Right? We all want to be heard. So by just keeping quiet and listening to the other person for 15 minutes, 20 minutes, but होता क्या है? We listen to the other person with an intent to reply. कि कब सामने वाला अपनी बकबक बंद करेगा, because when he's talking on some point, हमारे दिमाग में एक नया पॉइंट शुरू होता है which is related to the point that he or she is discussing, and we just wait for the other person to shut up और कब मैं अपना point of view पेश करूं. So we always listen with an intent to reply, but we should always listen with an intent to understand that person and ask more questions. अगर वो कुछ बोल रहा है, ask questions and lead him to go deeper into what he or she is saying. वो हम नहीं करते हैं. हर एक को बस बोलना है, बोलना है, बोलना है. मैंने कई दफा देखा दो लोग बातें कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की सुन ही नहीं रहे, बस बातें कर रहे हैं. ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है. दिस इज सो कॉमन दीज डेज. या एवरीबडी वांट्स टू वेंट आउट. मुझे ये बताना, आज मेरे साथ ये हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है. ऐसे मामले में अगर कोई इंसान आपको मिले जो सिर्फ सुने, you will fall in love with that person. Farid has got amazing quality. He listens a lot. Another way of winning a new friend, or you want to grow friendship with somebody, is to share your weaknesses. Become vulnerable. Share the lowest points of your life, the sensitive parts of your life. Yeah. When I meet somebody, when somebody comes to meet me, whom I know over phone, and he seems to be a trustworthy guy or a girl, I share my past, my troubled past, the hardship that I went into my previous relationship, that I had a broken marriage. And when I share this somebody, immediately, so we expect trust from others. But to expect trust from others, you should be first trustworthy. And the best way to become trustworthy is to share your vulnerability. So when I share these, ये नाजुक चीजें मेरे लाइफ के जो पास्ट में हुए हैं, I had a horrible failed marriage, तो सामने वाला और शेयर करना शुरू करता है. If I have opened my book or अभी I have put down my guards, the other person feels more comfortable and the other person feels trusted. So कुछ गलत नहीं है. Of course, मैं ये नहीं बोलूंगा कि you should open the cards on the first meeting itself. Okay. Once you come to know this person is reliable, there's a difference between being reliable and being trusted. Okay, so reliability comes first and then comes trust. All right. And fast trust is almost an oxymoron. There is nothing called fast trust. Yeah, trust will build over a period of time.
by doing something consistently. है कि जब मैं बार बार आपको लग रहा है कि ये छोटे छोटे सफेद झूठ बोल रहा है, यू विल लूज ट्रस्ट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एंड आशीष मेट फॉर अ कॉफी इन अ कॉफी शॉप. बातों बातों में उसने कुछ एक दो बुक्स के नाम लिए. अरे अमृत, हैव यू रेड दिस बुक एबीसी? एंड आई से या आई हैव रेड, बट एक्चुअली आई हैव नॉट रेड, और मैं झूठ बोल रहा हूँ, राइट? तो भले ही वो मेरा झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाए या ना जाए, समवेयर आई हैव पुट अ क्रैक on the relationship between me and Ashish. Because there are two types of mistakes in relationships. One is a mistake of technique. मतलब अभी की बात है, my friend Sushil was helping me to set up this everything. There are lights, a laptop, this mic. So he was helping me. और करते करते मेरे सामने एक छोटा सा अलार्म क्लॉक है, so that I can keep a watch on the time. Yeah, I'm not going beyond the stipulated time. तो उसके हाथ से गिर गया. मैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स एन ऑनेस्ट मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक ऑफ टेक्निक. ओके, वी पार्डन मिस्टेक्स ऑफ टेक्निक. द अदर मिस्टेक इज सो डेंजरस, वो हम उसको कभी माफ नहीं करते, एंड दैट्स मिस्टेक ऑफ कैरेक्टर. अगर सचिन सचिन स्टार प्लेयर है और वो जीरो पे आउट हो गया, तो क्या हम बोलते हैं कि अरे तू मेरे को झूठ बोला, तू तो स्टार प्लेयर और जीरो को आउट हो गया, ऐसे कैसे, तू झूठा है? हम ऐसा नहीं बोलते, बिकॉज इट इज मिस्टेक ऑफ टेक्निक. Mistake of character is the example that I told when I lied to Ashish, where I had actually not read that book, but because I'm booklet guy, to protect my ego and image, I pretend, I lie to him that yes, I have read that book. और अगर उसको कहीं ना कहीं जब बाद में पता चल गया कि actually he doesn't know about that book, no, that's a mistake of character. And usually, not usually, always, we never forgive the mistake of character. Mistake of technique, fine. These are all honest mistakes. Uh, so, no, sharing vulnerability is a very good way. I think it is highlighted a lot in this book called Platonic. Of late, we have started a new practice we have a bunch of 10-15 friends in Booklet House. We meet almost every day. And all are like running their own startups. So this was my dream, that we are a bunch of entrepreneurs, helping each other in their own startups. And I mentor lots of startups and try to give as much knowledge I can that I have gained from thousands of books. And so, because we are a group of 10-15 boys and girls, so सबका बर्थडे आता है, राइट? और टिपिकली आजकल बर्थडे का क्या है, कुछ लेंगे, कपड़ा लेंगे, ड्रेस लेंगे, कुछ सूट लेंगे, जूते लेंगे, या परफ्यूम लेंगे, घड़ी लेंगे, मोबाइल. आजकल सबसे कॉमन है मोबाइल फोन लेना. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये तो ठीक है, घिसे पीटी चीजें हैं जो सालों से होते आ रही है. सो ऑफर देम एन आइडिया दैट हाउ अबाउट, और ये क्यों करते हैं मतलब में, बिकॉज सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करने के लिए. क्यों बर्थडे बॉय को बोलेंगे नहीं या बर्थडे गर्ल को बोलेंगे नहीं कि क्या गिफ्ट है, उसको मस्त रैप करके. अभी वो सरप्राइज एलिमेंट इज गोइंग टू लास्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. So I thought, instead of that, removing the surprise element, and ask that person that what is the most needed thing that you want right now in your life. Forget about the price. Okay, so we experimented this with Farid. It was Farid's birthday last year in the month of July, and I asked him that what is the most needed thing right now. What is the pain point? And he said कि घर का washing machine अभी almost dead हो गया है. So we are planning to buy a washing machine. So I immediately talked to all my friends, and तो कुछ 15,000 का वॉशिंग मशीन था, तो हमारा कंट्रीब्यूशन करके वो 10,000 इकट्ठा हुए. एंड ऑनेस्टली वी टोल्ड हिम दैट 10,000 हो गए इकट्ठा, ऊपर का 5,000 तू खर्चा कर, एंड द वॉशिंग मशीन वाज देयर. अभी आप बोलोगे कि दिस इज सो बोरिंग, वॉशिंग मशीन क्या बर्थडे गिफ्ट देना है, राइट? मुझे माइक्रोवेव क्या बर्थडे गिफ्ट देना है, राइट? बट डोंट यू थिंक दिस इज सो यूजफुल दैट जब भी उसके कपड़े धुल जाएंगे वॉशिंग मशीन से, उसको उसके दोस्तों की याद आएगी, वो भी अगला 10 साल के लिए, as long as the washing machine lasts. And even if he could not contribute 100% of the price of the washing machine, that's fine. Still, he's at the advantageous position, because for him the washing machine is now only for 5,000 rupees.
Remaining 10,000 was contributed by his friends, right? Contributing 500 rupees each or whatever. So let's try doing these things. Yeah. और उसके बाद भी now we have another birthday party on 6th. We have a friend called Swapnil. तो मैंने उसको पूछा कि बोलना तेरे को चाहिए, मतलब मुझे नहीं यार, बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास सब कुछ है, तुम बस मेरे घर पे आओ तुम लोग खाना खाने को. सो आई केम आउट विद एन आइडिया दैट हाउ अबाउट गिफ्टिंग शेयर्स टू हिम. हम कंट्रीब्यूट करेंगे और एक कोई एकदम ब्लू चिप स्टॉक जो हमको पता है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी टाटा कंपनी का स्टॉक, उसको हम गिफ्ट करेंगे. एवरीबॉडी लाइक दिस आइडिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस ऑन हिज बर्थडे ऑन 6th June. So that's what there is no limit to creativity and innovation. When we talk about creativity and innovation, we only restrict it to business and enterprises. No, there is a lot of scope of creativity and innovation in friendships, in relationships. पर उसको हम टाइम नहीं देते, उसके बारे में हम ज्यादा बोलते नहीं, because it can't be measured in numbers. Whereas creativity and innovation in business can be measured in numbers. But unfortunately, look, anything which can't be measured in numbers doesn't make it less important. Right? You know what? We eat some 3 to 4 kg of food, solid food in a day. We drink some 4 to 5 liter of liquid every day. But you know what? We consume 3 lakh liters of air in one day. कुछ comparison ही नहीं है. Yet, we don't talk about breathing. The next book that I'm going to take next week is called as Breath by James Nestor. We have become bad breathers now. Our exhaling has become half-hearted. We are under a major conception that oxygen is most important gas for us. No, carbon dioxide is more important than oxygen. That was the shock of my life. Anyway, the point here I'm not going to go deep into that book. The point I want to make is that if something can't be measured in numbers, doesn't make it less important. All right. See, we all know ERP, Enterprise Resource Planning. पता है वो क्या है? कि suppose now Nike is an MNC. It has got hundreds of organization branches in all the countries. And so होता क्या है कि अगर सपोज घोड़बंदर पे नाइकी का शोरूम है और से मुलुंड में एक नाइकी का शोरूम है और एक पर्टिकुलर शू का डिमांड घोड़बंदर के शोरूम पे ज्यादा है और स्टॉक मुलुंड के शोरूम में ज्यादा है, तो पहले क्या होता था, दे यूज्ड टू लूज द कस्टमर at Ghodbandar showroom because the stock was in short, whereas there is surplus of the same shoes in another branch, in another showroom. तो ERP, Enterprise Resource Planning में क्या किया, सबको common कर दिया. There is a common software which tracks the stocks which is lying at all the showrooms, और immediate जहाँ पे demand होएगा, immediately you can shift that stock where it is demanded most. That's called as Enterprise Resource Planning. SAP, Oracle, ये सब ERP packages हैं. It is a big hit in last 10 years, especially for MNCs. So I thought that ये ERP जो concept है वो हम हमारे relationships में भी ला सकते हैं. Like ERP, Enterprise Resource Planning. How about Social Resource Planning? So again, I suggested this idea in my group of friends. We have so many stuff at home. कोई बहुत लोगों के पास वो माइक्रोवेव है लेकिन वो यूज नहीं करते. They don't use it for reheating because the lady or the person cook वो reheat करके देते गैस पे and the microwave is unused for many months. तो हमने बोला कि एक ग्रुप क्रिएट करते हैं helping each other, जहाँ पे किसी का भी कुछ भी एक्सेस चीज है जो अनयूज्ड है पर फेंकने के लायक नहीं है, it is in good condition. You just put a picture and say that this is available in my house. Anybody wants, you can take it, borrow it from me for some days. And ERP जैसे we started making these resources common to everybody. Of course, my biggest asset is books. Books are always open for all my friends. No questions asked. They come, take books. But then other things, वो कुछ भी हो सकता है फिर. अभी मुझे उस दिन क्या चाहिए था? I wanted to make some healthy moong dosa, and I didn't have non-stick pan. Whereas dosa is not a common thing in my house. Okay,
वंस इन अ वाइल मैं कभी बनूंगा, तो उसके लिए मैं, व्हाई शुड आई बाय अ नॉन स्टिक पैन? सो आई जस्ट पुट अ मैसेज इन दैट ग्रुप एंड अ फ्रेंड लेंट मी नॉन स्टिक पैन फॉर वन डे. पर ये सब करने को हमको शर्म आती है कभी कभी कि यार हम इतने भी गरीब नहीं है यार, वी आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, ये सब चिंदीगिरी क्यों करने का. बट आई सी दैट I gave my friend an opportunity to help me. So when you do a favor, especially a small favor for somebody, then he feels grateful for it. Help लेना तो हमको अच्छा लगता है, ये help देने को भी हमको अच्छा लगता है. We have this innate desire to help others. पर कब तक सामने वाला अगर पूछेगा ही नहीं हेल्प के लिए, तो हमको कैसे समझेगा? सो हमें कभी झिझकता नहीं हो हेल्प मांगने में. Okay, never shy away to ask for help, especially if the the quantum, the magnitude of help is not huge. Of course, asking for 10 lakh rupees, 1 lakh rupees is a big help. मैं ये छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, asking for a non-stick pan for dosa. I think these things help a lot in the growth of our friendship. Yeah. uh, all right. आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो सोसाइटी होते हैं, कॉलोनी, जहाँ पे 3-4 बिल्डिंग का एक कॉलोनी होता है ना, आई आई लिव इन अ इंडिपेंडेंट बिल्डिंग. तो दिस द ओनली हाउस इन दिस बिल्डिंग, नो अदर फैमिली लिव्स. बट द सोसाइटीज में, जैसे धर्मेंद्र, आई हैव बीन एट धर्मेंद्र's हाउस. इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स ऑफ लाइक 50 टावर्स मे बी. तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे खेलते हैं ना, स्पेशली इन समर वेकेशंस, तो बच्चे पूरा दिन बाहर खेलते रहते हैं और गर्मियों में प्यास लगती है. Typically, those kids go to the same house to have water. एक ही घर पे जाते, एक ही फैमिली रहती है, which is always with open doors, and they embrace everybody, and the kids don't even think twice before going there कि आंटी मुझे ठंडा पानी दो, and the lady of the house or the man of the house comes and offer water. सब घरों में नहीं होता है ऐसा, राइट? मेरे बच्चों ने, मुझे याद है एक नाके पे एक घर था और हमेशा में उनके घर पे हम लोग का पानी पीने जाते थे. देर ऑलवेज हैप्पी टू ऑफर वाटर. एंड आप ऑब्जर्व करोगे कि हर कॉलोनी में ऐसा एक घर होता है, एक दो घर, एंड द डोर्स आर ऑलवेज ओपन. Whereas there are some families, some people whom I wanted to develop relationship, but I could not. I don't know, there was some invisible obstacles. उनके घर हमेशा बंद रहते हैं. I mean, the moment I entered their house, they closed the door. जैसे मैं जाऊंगा, close the door. I'm not saying that's the main indication, but that one of the indications that that they don't want to be social. Whereas if the doors are, and I'm talking about literally keeping the doors open, right? Not metaphorically. So when you keep your doors open, the house doors open, you're giving a welcoming sign to people. Look, we are transparent, we are open, we are not hiding anything. Come, we welcome you with open arms. We embrace with open arms. I do this. My doors are always open except in the evening to prevent mosquitoes to enter my house. बाकी पूरा दिन तो ओपन रहता है. There's one guy called Shubham. Again, he did something with me, suddenly I developed a lot of respect for him. No wonder we are very good friends now. So he got to know me through one of the videos, and now he's a voracious reader on Booklet app. He started reading. Now he has gone to Germany for further studies. And suddenly he came to meet me, of course, with prior appointment. And many people say that, Amrut, kuch help chahiye to bolo. Yes, and I like when somebody asks. But what he did was, he offered me a specific help. He did not just say that, kuch bhi chahiye to batao, I'm always there to help you, which is again a good gesture. There's nothing bad in it. But what he said was, see, Amrut, I live in Airoli. Yeah, I know you are extremely frugal. You are running a frugal startup. So for you, every rupee must be important. And you always say that your book, 7 Habits of Highly Effective Readers, helps you to cover the costs of mission. There are lakhs of expenses. Booklet app में लाखों लोग है use कर रहे, तो server rent होता है, cloud rent. So आइरोली के जो भी orders रहेंगे ना तुम्हारे book के, तो वो तो courier से मत भेजना. Give me some good number of books, like 5-10.
आइरोली का कुछ भी रहेगा तो तुम मुझे बस मैसेज करो उनका नाम और एड्रेस, और मैं उनको जाके ड्रॉप करूंगा बुक. एंड आई लव दिस जेस्चर. यस, इट्स अ स्मॉल हेल्प, बट ही केम आउट विद अ क्लियर इंटेंशन टू गिव समथिंग. और यहाँ पे कुछ बड़ा खर्चा भी नहीं है. इट्स जस्ट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ही हैज टू इन्वेस्ट. सो जस्ट सेइंग दैट, बोलो हाँ कभी कभी तकलीफ हो तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. सिर्फ बोलना नहीं है, बट नो, ऑफरिंग अ स्पेसिफिक हेल्प और फिर कर डालना. क्योंकि मैंने ये गलती की है बहुत बार. आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू माय फ्रेंड्स दैट आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, प्लीज टेल मी. पर सामने से नहीं कोई बोलता है, राइट, स्पेशली एजुकेटेड पीपल, राइट. उससे अच्छा हम खुद ही अगर कोई स्पेसिफिक हेल्प ऑफर करें, ऐसे छोटी सी, तो नो, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर टू टेक आवर फ्रेंडशिप वन स्टेप अहेड. As I told you that nowadays inviting people at home has reduced a lot, and that is, I think, is a serious concern for me. Yeah, let's not differentiate office and home so much. After all, both are, they're not different. It's not that we behave differently at home and we behave differently in office. We Life is one integrated whole. A person, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग ना, they try to be very disciplined, organized, neat and clean in office, और घर आने के बाद सॉक्स इधर फेंक देंगे, चाबियां किधर भी फेंक देंगे, या टीवी का रिमोट किधर पर गिरा हुआ है, वो बीवी देख लेगी किधर सॉक्स गिरा है वो. बट देन इफ यू ट्राई टू डू दिस, नो, दैट यू आर रेड इन हाउस एंड येलो इन ऑफिस, तो कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा आपके ऑफिस के, वो कैरेक्टर दिख जाएगा आपका, राइट. सो बीइंग रॉन्ग इन वन एरिया ऑफ लाइफ व्हाइल बीइंग राइट इन अनदर एरिया, ऐसा नहीं होता है. वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका. Life is one integral whole. So how you do anything is how you do everything. आप घर का के आपके शूज निकाल के शू रैक में रखते हो कि नहीं is as important as going to the office with clean shoes. Alright? और इसलिए मैं भी ये गलती करता हूँ कि कोई कोई मेहमान अगर आने वाले तो मैं इमीडिएटली आई आई कीप माई हाउस ऑर्गेनाइज्ड, सब क्लटर फ्री कर देता हूँ. या पर वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा. Whereas if I genuinely keep my house neat and tidy, regardless of whether anybody is going to visit my house or not, then that is working on my character. पर बाकी के दिन सब यहाँ पे कुछ गिरा है, उधर मेरे कुछ बुक्स बिखरे हुए हैं, यहाँ पे कुछ पेन गिरा हुआ है, पेपर्स गिरे हुए हैं, चार्जर कहीं पे गिरा हुआ है मोबाइल का, और फिर मेहमान आएंगे शाम को तो मैं उस तब तक सब चकाचक कर दूंगा. आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे. वी आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी नाइस एंड ऑर्गेनाइज. One thing, biggest learning in last 1 month, and I think it's one of the biggest learnings I've ever learned, thanks to this book. We give too less importance to group growth. Individualism, individual growth, individual liberty, ये वेस्टर्न लोगों से हमने इतना लिया है ना, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय individualism so much from the West, but I think it's a wrong notion. Independence. Yeah, I think independence is the biggest myth, bestowed on us by the Western culture. Yeah. We, as Indian civilization, believe in interdependence. I am dependent on next level. Next level is dependent on me. Nobody is independent. You are dependent on boss. Boss is dependent on you. अरे एक आधा लीटर दूध के लिए आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट ग्रोसरी वाला, दैट ग्रोसरी वाला इज डिपेंडेंट ऑन मी फॉर हिज इनकम. We all are dependent on each other. And so we have a habit of exercising at 6 o'clock in the morning. A bunch of friends come on my terrace to exercise. Even if we are exercising in a group, somewhere secretly in my head, I I was into a competition with my friends. कि नहीं, मैं आज उनसे थोड़ा ज्यादा पुशअप्स मारूंगा या कम टाइम में मारूंगा. बट ग्रेजुअली मैंने देखा कि वो सबकी ग्रोथ अलग अलग हो रही है, because there is a secret competition amongst us, even if we pretend that we are exercising together. Of late, what I have realized is कि if I just take away this rigid mentality
of individual growth, my growth, and just look at the group as one unit. Me not as a separate unit from the rest of the group, but group as one unit. And immediately my approach changed. My vocabulary changed. I started saying, अरे चल चल मारते हैं ना दोनों, चल ना और 10 मारते हैं ना पूरे पुशअप्स, चल let's push our limits. एंड उस चक्कर में मेरा ज्यादा एक्सरसाइज होने लगा. तो ये जो इक्वेशन है ना कि दूसरे का फायदा इज इक्वल टू मेरा नुकसान, इज अ बिगेस्ट मिथ. ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरे का फायदा मतलब मेरा नुकसान. ओके, दूसरे का फायदा और मेरा भी फायदा ये पॉसिबल है, या फिर दूसरे का फायदा और मेरा कुछ भी नहीं, ना फायदा ना नुकसान, वो भी पॉसिबल है. बट बाय डिफॉल्ट हमको लगता है कि दूसरे का फायदा मतलब मेरा नुकसान. आई गिव अ सिंपल एग्जांपल. आई वाज फ्लाइंग टू चेन्नई. So I was on the flight from Mumbai to Chennai. I was sitting on the aisle seat. There are three gentlemen sitting in the next row. Okay. So we were about to land, and the air hostess made an announcement that please fasten your seat belts, put up the tray table. अगर खुला है तो उसको बंद करो. Open the windshield of the window. वो सब instruction दिए. And she started coming to check कि सबने instructions follow किए कि नहीं. There was a gentleman sitting in the window seat who was fast asleep, and the air hostess was trying to tell him ki, sir, please tray table, lift your tray table, we are about to land. But he was so fast asleep कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. And it was not possible for her to reach out to the tray table to close it because he was in the window seat and she was near the aisle seat. And something I saw which proved this fact that दूसरे का फायदा is मेरा नुकसान. The guy sitting in the middle seat, you know what did he do? He woke up that guy and asked him to close the tray table, whereas he could have easily extended his left hand by just 1 feet and closed the tray table without him knowing that he did a favor. It was such a bare minimum act of kindness, but he did not do. I was surprised कि why he did not do that, right? Because एक तो वो सोया था, तो मैं उसको हेल्प करूंगा और उसको पता भी ना लगे, ऐसा मैं हेल्प क्यों करूं? So I don't know, these expressive thoughts might not have ran through his head, but the fact that he did not help was a disappointment to me, right? और ये बहुत जगह मैं देखता हूँ कि ऑफिस में क्यूबिकल्स होते हैं और बाजू के क्यूबिकल का लड़का लड़की वॉशरूम में चला गया या कॉफी ब्रेक के लिए गया और उसका लैंडलाइन बज रहा है. दे डोंट इवन बॉदर टू पिक अप द फोन. व्हाट इज द हार्म? व्हाट इज द हार्म इन पिकिंग द फोन? कहते हो द गाय इज अवे, कैन यू प्लीज कॉल हिम अगेन, जस्ट गिव मी योर नेम एंड नंबर, आई विल कन्वे द मैसेज, दैट्स ऑल. दीज आर द टाइनी थिंग्स यू हैव टू डू इन फ्रेंडशिप. पर वो क्या है, मेरे केआरए में बैठता नहीं है तो मैं उसका फोन क्यों उठाऊं? Every time we look at relationships nowadays as transactions and not as meaningful relationships. ऐसा नहीं कि मुझे हर बार ऐसा होता है, मेरे से भी गलती हुई है. Very one story that happened with me. So it was almost 5-6 years ago when I had just started Mission Make India Read, and things had started picking up. There were 50,000 people as part of the mission, and for the first time, there was a national newspaper called state newspaper called Lok Satta, and they decided to come to meet me and cover my story, interview me, and print an article in that newspaper. And I was extremely happy. There was a huge celebration in my house. First interview as Booklet guy. And I had this habit of going to Joggers Park, which is 15 minutes away from my house. And jogging होने के बाद, I had this habit of having one cutting chai at a chai tapri. And I was doing this almost 3 days a week. तो वो चाय वाला मेरा अच्छा खासा अभी दोस्त हो गया था. हम बातें करते थे. We used to, वो न्यूज़पेपर्स भी बेचता था. तो कभी कभी न्यूज़पेपर में जो हेडिंग है उसके ऊपर हमने चर्चा होती थी, पॉलिटिक्स पे चर्चा होती थी, चर्चा नहीं, गॉसिप होती थी बेसिकली. तो one fine day when that article was printed in that newspaper, and as usual, habitually, after jogging, I went to him and asked for a cutting chai. And he said, अरे साहब आपका फोटो आया है,
पेपर में, ये देखो, ये देखिए, yeah, I said yes, I forgot to tell you. And he was so happy because no, it's a photo of the person that he knows. And I also said, thank you so much, this is my first interview, अभी आगे देखो बहुत कुछ होने वाला है. And I told him everything what I do. And then he said something. He said, साहब, आज की चाय मेरे तरफ से, as a, let's celebrate. He wanted to participate in this achievement, in this celebration. And I said, हाँ ठीक है वगैरह. But then I did something, a big blunder, and I regret. So I had parked my car on the other side of the road because I was not carrying any money in my pocket because jogging में पैसे वगैरह में रखता नहीं हूँ. So I went to my car, took a 10 rupee note and gave it to him. और उसके बाद उसका चेहरा इतना गिर गया. I could see utter misery on his face. The mistake that I did was I I thrashed his initiative of offering a kind gesture to me. He wanted to participate in the celebration by just gifting me one cup of chai. पर मैंने उसको I thrashed his emotions because हम educated लोग हैं ना. एक एक चाय वाले गरीब से मैं क्यों एहसान लूं. Now these thoughts might not have ran in my mind expressively, but the fact that I denied his kind gesture and gave him that 10 rupee note, yeah, that was because to maintain the status or whatever. So every time ऐसा नहीं है कि we should look at it as a transaction. And these are the small things, and I really regret that day. Yeah. So especially when small amounts are involved, ना, just forget 50 rupees, 100 rupees में हम तुरंत दूसरे को वापस करते हैं. मेरी बहुत खराब आदत थी ये कि किसी से कुछ किसने हेल्प दिया तो वो तुरंत नो नोट करने का और वो 50 रुपए वापस करने का. But in close relationships, I don't think these things are so necessary. Of course, it depends on case to case. I can't generalize it, but we need to keep this in mind because I learned this lesson by paying a big price in relationships. I have my bank accounts in HDFC Bank, personal savings account, current account, and a dedicated relationship manager is appointed for me. And a very nice guy who calls me every fortnight or every week to just inquire how are things going. Are we serving nicely to you? Do you have any complaints? Okay, do you have any queries? Or just to ask about my whereabouts, or how are you? How's your business doing? Yeah, are we good service providers to you? I really love such kind gestures when such call comes from a service provider. But again, similar to the mistake that I made, before I cut the phone, वो कुछ ऐसा बोल जाता है और मेरा पूरा रिस्पेक्ट कचरे के डब्बे में चला जाता है. You know what he says? सर वो एक नया स्कीम आया है हमारे पास, तो आप करोगे क्या? वो कुछ अभी एक आईपीओ आने वाला है, उस पर इन्वेस्ट करोगे क्या? और फिर मुझे लगता है कि अच्छा, साला इसके लिए फोन किया था उसने. He was not genuinely interested in my whereabouts, how I was doing. It was a business call, and those inquiries about my personal life was only a persuasion. You know what? You know the word persuasion? We all know the word persuasion. Persuasion is a statement to get something done from the other person. To get a yes from the other person is called persuasion. To persuade the other person, right? Persuasion is a statement before the statement of persuasion. There is an entire book called Persuasion written by Robert Cialdini. I am not sure whether it's a dictionary word or the word is coined by the author Robert Cialdini. But persuasion is like वो माँ बच्चे को जब कड़वी दवाई देने से पहले गुड़ का टुकड़ा देती है ना, तो वैसा कुछ था. तो दैट देन आई इमीडिएटली केम टू नो दैट ये तो गुड़ का टुकड़ा है भाई. मेन चीज तो उसको कुछ मुझे बेचना था, कोई प्रोडक्ट बेचना था, और ये तो सिर्फ बहाना था फोन करने का. सो ये नहीं होना चाहिए. If you are asking, you care about somebody, you should genuinely care about it. Don't disguise it with some other preconceived notion. Yeah. Today, communication medium have increased so much. See, we can convey a message through a WhatsApp,
message, through a video call, through audio clip, व्हाट्सएप पे ऑडियो क्लिप भी शेयर किया जाता है, और फोन कॉल, चार अलग, ईमेल, ठीक है ना। लेट्स रेस्ट्रिक्ट टू मोबाइल, फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, अ वॉइस नोट एंड अ वीडियो कॉल, ये चारों अलग अलग माध्यम है। आज मैं क्या एक्सपीरियंस करता हूँ कि whether it is young or old, the easiest way to communicate has become texting somebody. But we should understand when to use text as a medium, when to call somebody, pick up the phone and call, when to send a voice message, or when to have a video call. See, if it's a one word reply कि किसी ने पूछा है कि ये ठीक है तो मैं okay, I can put a okay message in form of a text. But no, if I want a help from somebody, किसी को मेरे से कुछ help चाहिए और वो मुझे अगर टेक्स्ट करेगा व्हाट्सएप पे, and it's relatively a big help, I would say to him, he's not a serious guy. He don't even have the courtesy to call me. Forget about meeting me face to face. At least he should have the courtesy to call me, because our voice has got emotions. Text message has no emotions. A simple okay on WhatsApp can be taken as rude statement. आपको भी अनुभव आया रहेगा उसका। पर ये जो टेक्सटिंग कल्चर है ना, इससे काफी झगड़े बढ़ गए हैं ग्रुप में, इंडिविजुअल चैटिंग में। So let's be very cautious about it. It is affecting our friendships at a big level. बहुत झगड़े हो रहे हैं व्हाट्सएप पे। क्यों? Because because the text has zero emotions. जो टोन हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट लिखने के लिए, वो टोन सामने वाला लेता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ मुझे मैसेज किया, माई टोन वॉज लाइक ओके, बट यू विल टेक एज ओके। Alright, so a simple okay can lead to big quarrels and fights on WhatsApp. So it's easier way to pick up the phone and call. So at the most, what will happen? I'll not pick up the call, but then I'll give you a call back. That's professionalism. But बहुत बार people find it so intimidating to call me. I don't know why. वो 10 बार पूछेंगे WhatsApp पे मैं कॉल करूँ क्या? Then what is the right time? Then I give them the right time, 4 o'clock. फिर 4 o'clock के 2 मिनट पहले वापस मुझे मैसेज करें, कैन आई कॉल नाउ? भाई मैंने बोला ना 4 बजे फोन करो। Now we should use WhatsApp text as a good medium of communication, not as an escape, as a to take care of our fear to call somebody. तो आजकल क्या हो रहा है? We are using WhatsApp as an escape, that we do not have the courage to call and talk to the person, especially if he's a new guy, he's a stranger, a person who is above our status. In this kind of relationships, no, we are using WhatsApp as a escape mechanism. तो वो नहीं होना चाहिए. We should have the maturity to understand when to use text, WhatsApp text, when to call somebody, or no, voice note is, I use a lot of voice notes because the other person comes to know about my emotions, especially if it's a long message. तो कभी कभी क्या होता है, सपोज मैंने धर्मेंद्र को कॉल किया, he was busy, then he called back me, I was busy. इस चक्कर में बस पकड़ा पकड़ी चलती रहती है और बातें होती नहीं है. So at times I find a solution. I leave a voice note for him. You listen as per your convenience. My emotions are also conveyed because it's a voice text. So this is a very good way to protect the emotions and help our relationships. Okay. There are some not so necessary gestures which are nowadays absent. For example, so I'm a chartered accountant by education, not by profession anymore. You know that. And I never took any CA classes. I was never a student where I'll sit and listen to a teacher on the podium and learn. I was a self-studying guy. But I heard that there was a very renowned tuition classes, CA classes in Mumbai called JK Shah. And उनके notes बहुत famous थे. So from a friend who was attending that class, तो मैंने उसके notes के xerox लेके पूरा पढ़ाई करके CA हो गया. And then after getting my results, I went to that sir who is very famous in JK Shah classes and told him that, sir, look, I was never your student, but I used your notes. And here I am, I'm a qualified chartered accountant. So thank you so much for such beautiful notes. But sorry, I was never your student.
That guy, I could see tears of joy in his eyes. He hugged me so hard, और he said that मेरे बच्चे जो पास हुए मेरे पास आए वो कभी कभी आते नहीं है मिलने, and you came and at least had the courtesy to tell me. Of course I am not disappointed. I loved his gesture. Now these things are not necessary for me, right? मैं तो डर डर के गया था कि सर डांटेंगे कि भाई ये इलीगल काम है, तूने मेरे नोट्स का जेरोक्स निकाल के तू साला पास हुआ। पर ऐसा हुआ नहीं, because I owed him something, that I used his notes and they were really quality notes, and no wonder that's why they were so famous. So these not so compulsory gestures are missing these days. Okay. Festivals पे क्या होने लगा है पता है? We are using festivals to promote our business. ठीक है, to some extent we should do it. But then wishing somebody on WhatsApp happy birthday, do you really think it has got emotions? मतलब जब मुझे व्हाट्सएप पे किसी का हैप्पी बर्थडे आता है तो ठीक है यार, नॉट मच एफर्ट्स इन, बट वॉइस नोट आएगा, या आई वुड लव इट। मोर देन दैट अ कॉल आएगा, आई वुड लव मोर। हाँ, मोर देन दैट वो मुझे आके मिलेगा, दैट्स द बेस्ट थिंग आई एवर एक्सपेक्ट। अगर मुझे ऐसा लगता है तो सामने वालों को भी ऐसा लगेगा। और वो ग्रुप व्हाट्सएप पे जो हम डालते हैं मैसेज हैप्पी बर्थडे, दे आर यूजलेस। वो तो करना भी नहीं चाहिए। या even wishing each other on festivals has been restricted only to Diwali. Happy Diwali has become on WhatsApp. क्यों इतने हम आलसी हो गए क्या? We can't even pick up the phone and talk. ठीक है, जाके मिलना, it is time consuming, but what about a phone call? What about video call? Video call is an amazing platform. You know, okay, my sister lives in US, and we only do video calls. There is hardly any chatting or texting or phone calls, audio call. We do only video calls. No wonder, we have maintained that relationship, because when we talk, I was surprised to know that our communication consists 70% non-verbal communication. मुझे लगा ये स्टैटिस्टिक थोड़ा एग्जैजरेटेड है क्या? 70% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। मतलब मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मेरा जो हाथ हिल रहा है, मेरी गर्दन हिल रही है, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस, यू आर नोटिसिंग 70% ऑफ दैट इज कम्युनिकेटेड थ्रू माय जेस्चर्स एंड ओनली 30% थ्रू माय वर्ड्स। दिस इज प्रूव्ड। हाँ, ये मेरा बना बना नहीं है स्टैटिस्टिक। हार्ड टू बिलीव ना, राइट? But see, look at my smile, look at my hands. Yes, I think it constitutes 70%. तो वीडियो कॉल इज अ फैंटास्टिक वे। आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है, बट देन इट इज इंटिमिडेटिंग। फिर नहीं, मैंने आज दाढ़ी नहीं की है, नहीं मैंने एड्रेस में हूँ, बाकी के नखरे होते हैं, है ना? No, of course you have to ask. You can't directly video call because you don't know in what position that other person is, whether he's in bathroom or bedroom. Okay, but no, video call is a very good avenue to build relationships, because our eyes talk more than our mouth. One big lesson I learned in demonetization, that how I lacked in building relationships. So I had good amount of money, cash in my house, and मुझे कुछ दूध लेना था, हाफ लीटर दूध लेना था। सो बहुत सालों से मैं, वो एक नुक्कड़ पे एक औरत है, वो दूध बेचती है, तो उसके पास मैं जाता था और दूध लेके आता था। और फिर डिमोनेटाइजेशन आ गया और वो आई थिंक 1,000 रुपए के नोट्स कुछ बैन हुए थे, ऐसा कुछ हुआ था, राइट? और उस दिन मेरे पास बाकी नोट्स थे नहीं, कुछ ऐसा हुआ, एंड मेरे पास सिर्फ 1,000 की नोट थी, एंड आई ऑफर्ड दैट 1,000 रुपी नोट टू दैट लेडी, एंड शी सेड नो, आई कांट एक्सेप्ट, देयर नो मोर वैलिड करेंसी। एंड उसके बाद कुछ ऐसा हुआ which was a tight slap on my face, and I learned a big lesson about relationships. दूसरी औरत आई, और सेम शी वाज इन द सेम सिचुएशन। तो उसके पास भी बाकी 50 के नोट्स नहीं थे, 100 के नोट्स थे, 1,000 के थे। एंड शी इमीडिएटली अग्रीड कि ठीक है ठीक है आंट, आपको तो ठीक है यार। उसने शी अग्रीड विथ हर, उसने उसको सिर्फ दूध दिया और बोला कि आप मुझे कल पैसा दो, चलेगा। एंड देन आई रियलाइज the mistake that I did for last so many years. I was meeting this lady every morning at 6 o'clock, but I never inquired
about her children, how old they are, what are their names, where does she live, and it involved zero cost. If anyway I was meeting her and spending few minutes with her, there was no harm in asking and establishing a small relationship with her. तो फिर मुझे लगा कि क्या फायदा मैं सीए और पैसा कमा के अगर मैं एक आधा लीटर दूध नहीं खरीद पाया, तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए। क्या फायदा इन पैसों का? Demonetization taught me a big lesson that status जरूरी नहीं है। Just because वो दूध बेचने वाली है तो क्या हुआ? If I'm anyway going to meet her every day, I might as well talk to her. There is no harm in it. And no wonder I changed my approach. और अभी क्या है, एक एक फ्रूट वाला है हमारे एरिया में, वो किसी के घर में फ्रूट्स जाके देता नहीं, वो सिर्फ मेरे घर में देते हैं, because I've established that personal relationship with him. Yeah, I think I've shared all the points from the book which I wanted to. When initially I just one point I skipped, Ashish. So when I just started Mission Make India Read, so I used to attend all the startup events, networking events, जहाँ पे लोग मिलते हैं और जो गेस्ट आते हैं. I was part of the audience. अभी तो I am mostly on the stage as a guest speaker, but in those days I was part of the audience as a सहमा सा डरा डरा हुआ, not so confident guy. आइडिया चलेगा कि नहीं, ये तो बहुत किसी ने किया ही नहीं है ऐसा, समरीज बनाना वगैरह. So all the renowned speakers used to come and deliver lectures, and I used to, big guys, Kunal Shah, Cred wala, who was running free charge in those days, Ola ka startup owner, सब आते थे. And I used to go after that event. I used to go them and, sir, please help me. I'm doing this. I need your mentorship. I need your expert guidance. Please, can I come to meet you वगैरह? I need your number. तो यूजुअली वो नंबर नहीं देते पर मेरा नंबर लेते थे. मतलब प्लीज टेक माय नंबर सर. ऐसा मैं एक कागज पे, आई डोंट हैव द मनी टू प्रिंट विजिटिंग कार्ड्स, सो मैं कागज पे मेरा नाम और नंबर लिख के उनको देता था विद द होप दैट दे विल कॉल मी इन 2-3 days. आई नेवर यूज्ड टू गेट अ कॉल, नेवर. देन आई रियलाइज कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ. आई रिवर्स द प्रोसीजर. मैं ये बोलने लगा कि सर अभी मेरे पास ना 10,000 लोग हैं व्हाट्सएप पे, मैंने ऐसा शुरू किया है. आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन योर वेंचर इन वॉट एवर स्मॉल वे आई कैन. इमीडिएटली दूसरे दिन फोन आने लगा. राइट. सो दिस इज द वे, जस्ट गिव एंड टेकिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली. हम पहला टेकिंग पे फोकस करते हैं, इवन इट इज अ रिलेशनशिप. ऑलराइट, फर्स्ट बी अ गिवर and then you will gain. Givers always gain. And no wonder why I always talk about Farid, who is the most important person in my life, one of the closest friends. He's the best giver. वो कुछ मेरे लिए कुछ लेके आएगा ना खाना, वो फ्रिज में रखेगा, मुझे बताएगा भी नहीं. आई थिंक मतलब उसका ईगो इतना भी नहीं है, 1% भी नहीं है कि he doesn't want me to know that he has done some favor on me. वो तो मुझे 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि अच्छा, वाया वाया किसी से पता चलता है या फिर टेस्ट से मुझे पता चलता है, अच्छा ये तेरे अम्मी ने बनाया. बिकॉज ही कम्स फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, तो उनका टेस्ट, उनके मसाले अलग रहते हैं. देन आई गेस, मेक अ गेस्चर कि अच्छा ये फरीद ने रखा होगा शायद. आई थिंक दैट्स अ वे ऑफ ट्रू गिविंग. और फ्रेंडशिप में ये होना चाहिए. मेरा एक दोस्त है, ही रन्स एन एनजीओ. वो तो बोलता है कि अमृत, जो हमको नहीं चाहिए हम दे देते हैं ना चैरिटी में, वो तो ठीक है, दैट इज नॉर्मल गिविंग. जब तू तेरा फेवरेट टी शर्ट जो तूने एक हफ्ते पहले खरीदा है, विच इज योर फेवरेट कलर, वो उठा के तुम किसी को दे दोगे ना, बिना झिझक, बिना हेजिटेशन, दैट डे यू विल बिकम अ ट्रू गिवर. मैं बोला बॉस, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए. अभी तक वो मेरा दिल बड़ा हुआ नहीं है, बट आई विल ट्राई. So on this note, I would like to stop talking, and if you have any questions. Shantanu ji is asking, what if I had a betrayal in friendship, need to talk to you if you allow? So I think could you repeat? Shantanu ji को friendship में एक betrayal मिला है and he wishes to talk to you. So अच्छा, 1-to-1. हाँ, I think so. He means that way. Fine, you can get in touch with me. Yeah, you can share my number with him. Sure. So Shantanu ji, please get in touch with me. I will pass on Amrut's number to you.
मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में At डाला. most, I'll recommend him a book. That's all I can do. Okay, so Swapna ji is asking a question that why people instantly stop talking. In this case, what can we do? अगर कोई अचानक से बात करना बंद कर देगा आपका दोस्त, हाँ हाँ हाँ. तो क्या कर सकते हैं? That's a very specific question. Uh, See, एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट मैंने सुनाई देता है कि अमृत, पता है कि जब हमारे अच्छे दिन होते हैं ना तो सब लोग अच्छे होते हैं, पर जब बुरे दिन आता है ना तो हमारे साथ कोई नहीं आता है. ये कॉमन स्टेटमेंट है. आई थिंक टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, बट व्हेन वी आर पॉइंटिंग फिंगर टू समबडी एल्स, देयर आर थ्री फिंगर्स ऑलरेडी पॉइंटिंग टुवर्ड्स आवरसेल्व्स. Whenever people say about these things, I turn the pages towards me. That if somebody was not standing to help me during the lowest points of my life, then it is a very good indication that I was not of help to others during my good times. अगर मेरे बुरे दिन में अगर कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है तो आई थिंक आई वेंट रॉन्ग समवेयर इन द पास्ट ड्यूरिंग माय गुड टाइम्स. Another assumption that we make, that during my bad times when that person did not help me, we are assuming that he is in good times. अरे वो भी तो बुरा समय से चल रहा होगा, इसलिए शायद वो is not turning up. There are so many things, but our bias is towards blaming others. If somebody is not talking, fine, check out first कि हमने हमारे से कुछ हुआ है क्या गलती, right? So there is a book called When Sorry Isn't Enough. What a beautiful name. कि बहुत बार हम सॉरी बोलते हैं, बट सॉरी शुड बी फॉलोड बाय द रीजन व्हाई यू आर सेइंग सॉरी. द अदर पर्सन वांट्स टू नो व्हाई यू आर सॉरी. अगेन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अगर मेरे से कुछ गलती हुई एंड आशीष इज जस्ट फ्यूरियस एट मी, और मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है चल सॉरी सॉरी आशीष, अरे ये सॉरी नहीं, ये उल्टा गाली होगी, वो और भड़क जाएगा मेरे पे, राइट? बट इफ I just eye to eye contact करके with a soft voice that Ashish, I'm really sorry for what I said that day. I was not supposed to say that. अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो मुझे भी बुरा लगता. I really apologize. Now that's the right way of saying sorry. That's a real apology. So how you apologize is more important than the apology itself. Yeah, there is a book called 1 Minute Apology. Yeah, it's a 50 pages book. 1 Minute Apology. I think apologies work wonders in any relationships. But then how you say sorry is more important, and then always give a reason why you're sorry. I may not have answered the question directly because I'm not a relationship expert. Okay, I have myself gone through a horrible relationship in the past. तो एक सवाल मुझे भी पूछना है. सवाल ये अमृत जी, बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं, काफी यंगस्टर्स है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बुक पढ़े, ठीक है. लेकिन कॉमन गलती, क्योंकि मैं नॉर्मली जब भी कोई बुक फेयर होता है बच्चों के साथ में जाता हूँ स्कूल के अंदर, तो पेरेंट्स बोलते हैं तेरे काम की बुक नहीं है, नहीं खरीदना है, ठीक है. और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े. तो कहीं ना कहीं ये गलती जो होती है कि हम पहले एज्यूम कर लेते हैं ये बुक उसके काम की नहीं है, और दूसरी तरफ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा किताबें पढ़े. तो जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो किस तरह बिहेव करे अपने बच्चों के साथ में, या किस तरह वो मोटिवेट करे कि उनके बच्चे किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें? Sure. See, पेरेंट्स को मोटिवेट नहीं करना है बच्चों को. Motivation is overrated. Yeah. Kids do what we do, not what we say. Yeah. अगर हम पूरा दिन टीवी देखेंगे, बच्चे टीवी देखेंगे. अगर हम पूरा दिन मोबाइल पे है तो वो भी मोबाइल पे रहेंगे. I am yet to see a family where parents are voracious readers and children hate reading. Impossible. Because impossible. Yeah. चोर के घर में चोरी पैदा होगा, संत के घर में संति पैदा होगा. हालांकि संत लोग शादी नहीं करते तो बच्चे का सवाल नहीं है. That's a wrong analogy. So what we have to do is, we don't have to preach, we have to practice and talk what you read. Don't tell him what to read. Yeah. Tell what you read on the dining table. Switch off the mobile, switch off the TV, and during the lunch, during dinner, whatever your family time is, the best way to lift up the quality of conversation in family is to share one big idea
that you learned in the last book or yesterday, regardless of whether your child understands it or not. पर हम क्या करते हैं, we fall down to the level of the children and talk in their language. वो तोतला भी बोलते हैं ना, अरे तेरे को मालूम है कि you are not supposed to say, speak in this way, talk as if you are talking to an adult. They may not understand 100%, but they will understand something. Even if they don't understand anything, it's okay. You keep talking as if you're talking to an adult. All right. One big idea. जैसे मैं एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ, आज जो आपने सीखा है इस बुक में से, just on today on the dining table, just share one story that I told. Okay. Stories, everybody loves stories. Kids तो love stories. मैं पूरा क्या करता हूँ talk में? Why my talks are so engaging? I just share stories, not even stories, anecdotes. The stupid household घर के anecdotes I share, and you guys like, right? मैं कोई research वगैरह नहीं करता हूँ. I think my best quality is I immediately connect to my personal past anecdotes, whatever I read, and I share with you. ये सवाल जो पूछने का रीजन था अमृत जी, बिकॉज नाउ कलेक्टिव ऑन अ मिशन टू इंडिया रीड, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा लोग खुद पढ़े और अपने बच्चों को इंस्पायर करें. तो जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं आज के सेशन को, कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था एक्चुअली, आई एम फर्स्ट टाइम ऑन दिस सेशन, आई एम फर्स्ट टाइम ऑन दिस. Because you asked a very important question now, and the most underrated feature of reading, जिसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते. रीडिंग मतलब एक घर के कोने में कुर्सी पे बैठ के पढ़ना. No, that is just one part of reading. The most important part comes after you read the book, is re-paraphrasing the concept, the idea, the piece of knowledge that you learned, and reproduce it in your own broken desi language, in your own vocabulary. Whatever I said, I did not use the language of the author, not even once. पर हम क्या करते हैं, we give too much of importance to the words used by the author and try to imitate, copy the words. Words are never important. Words are just messengers. The real message is in the meaning, in the idea, in the concept. So करना क्या है? No, I close the book 100 times when I read the book. It's an irony, huh? The best way to learn from the book is to close the book again and again. When I close the book and try to reproduce it, reparaphrase it in my own language, then that is real way of internalizing the piece of knowledge. If I keep the book open, I'm tempted to copy the language of the author. Whether I'm speaking, making a video, or taking notes, whatever. Close the book. और आपके देसी भाषा में उसको paraphrase करो, reproduce करो. That is how you internalize a piece of knowledge. And the best way is your family, your friends. जो भी सीखा है, उनको बताओ. I and Farid, this is our favorite hobby. ऐसा कुछ नया पढ़ते तो हम उतावले होते, कब मैं जाके मैं फरीद को बोला, और फरीद इज इम्पेशेंट टू शेयर इट विद मी. जैसे बच्चे को खिलौना देगा तो कैसे उसके आंखों में तारे निकल जाते ना, वैसे हमारा है. वी जस्ट go mad and we are impatient to share it with our friends. This is real reading, where you live the book by taking the ideas out and making them as part of you. That is not plagiarism. That is the whole object of reading a book. So मैं बोल रहा था कि काफी लोगों ने कमेंट किया था, दे आर फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन. तो आप ये नोट कीजिए, हर चौथा गुरुवार हमने इसी टॉपिक के लिए रखा हुआ है, इसी कंसेप्ट के लिए रखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको वक्त नहीं मिलता है पूरी की पूरी किताबें पढ़ने का, 300-400 पेज की किताब को, तो आपको सिर्फ हर गुरुवार को, चौथे गुरुवार को सेशन में आना है 7 बजे विदाउट फेल, और अमृत जी को सुनना है. तो एक अच्छी किताब का तो नॉलेज मिलेगा. और जब मैं नोटिस करता हूँ अमृत जी को, वो सिर्फ उसी किताब की बात नहीं करते हैं, उसके अलावा भी कितने सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं एक घंटे के अंदर. तो हर चौथा गुरुवार आपको बुक करके रखना है आपके मोबाइल में, आपके कैलेंडर में. ये गुरुवार सिर्फ किताबों के लिए है, अमृत देशमुख जी के लिए. और हम बोलते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. तो पढ़ने का काम तो अमृत जी कर ही रहे हैं और हमको इंस्पायर भी कर रहे हैं कि क्यों हमको पढ़ना चाहिए और किस तरह से अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए किताबें पढ़ने के लिए. तो हर चौथा गुरुवार आप बुक कर लीजिए आपके कैलेंडर के लिए. ये अमृत देशमुख जी के लिए नाम करना है. आशीष, ओवर टू यू. बिल्कुल. सो विकास जी, ये आपने जो बात की और गिवर्स की जो बात की अमृत ने इसके पहले, उससे एक पॉइंट याद आ रहा है. हम लोग के कॉलेज में एक प्रोफेसर थे,
वो हमेशा कुछ भी बात होता था, कहीं पे कुछ होता था तो सॉरी बच्चा, आई एम लेट, अरे बच्चा ये, अरे बच्चा वो, बेटा, सबको ऐसे अच्छे से बुलाते थे डिस्पाइट बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर। बट जब बात करते थे तो अच्छे से करते थे, अपार्ट फ्रॉम द टाइम यू रियली मेस अप एंड यू क्रिएट अ प्रॉब्लम। एंड आते जाते छोटा छोटा कुछ नोट्स या कहीं पे कुछ इंटरनेट पे आर्टिकल मिला तो वो दे के उसका लिंक दे के जाते थे, वगैरह करके जाते थे। एंड नाउ आई रिमेम्बर कि कॉलेज मेरा खत्म हुआ 1 साल पहले, अगर हम 4 कॉलेज के फ्रेंड मिलते हैं ना, तो किसी भी प्रोफेसर की अगर हम बात नहीं करेंगे, वो एक प्रोफेसर के बारे में एक बार तो बात होता है कि अरे कोई मिला क्या, अरे किसी ने कुछ बात किया क्या। सो गिविंग डजंट मीन कि आप किसी को अपना महंगा घड़ी दे दो या जैसे कहा फेवरेट कलर का टी शर्ट दे दो। गिविंग मीन्स कि जस्ट एक छोटा अगर डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो किसी के लाइफ में, तो वो गिविंग होता है। एंड दैट दैट प्रोफेसर, आई डोंट थिंक उन्होंने कभी ऐसे सोचा होगा कि बच्चे मेरे को याद रखेंगे सालों साल बाद। बट डेफिनेटली उनका जो नेचर था, या तो किसी के बारे में कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना, या अगर किसी को गलती से हाथ लग गया तो उनको सॉरी बोलना, या कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा तो उनके साथ शेयर करना, विच वाज नॉट इवन इन द सिलेबस, बट दैट इज समथिंग दैट इज ensured that that professor is in the mind of every student of that particular batch. तो ये भी एक मुझे काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगा। और दूसरे वैसे क्वेश्चंस तो काफी है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा जो गौरव ने पूछा है, that how to become a trustworthy friend with known people around you, like in a classroom, office, gym। कहीं पे भी अगर हम किसी से मिलते हैं, लोगों को जानते हैं, हाय हेलो, वो जिम में डंबल उठाते उठाते हाय तेरा सेट हो गया क्या, मेरा हो गया, कितना बाकी, वो सब पूछते हैं, लेकिन क्या हम उनके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड बनने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं? Yeah, there are so many ways. I think it's a good question. And in fact, I skipped that point. I used to go to a gym, a CrossFit gym, and my notion was that when I go to the gym, I'm 100% serious. No hanky panky, no chit chatting, no gossiping. Do your workout and go. Pack your bag and go out. But then people started taking my silence as being rude. That he's very arrogant because I'm not talking, and this is a very common concept. But then at the same time, I didn't want to compromise with my time. मैं चिट चैट करने के लिए नहीं जाता हूँ जिम में, मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाता हूँ. So I found a very simple solution. एक तो I started giving smile to everybody. जो भी आप बड़ी smile देंगे. So that is the best way to put down all the filters, all the obstacles between you and other people. Second, small helps. कि किसी को प्लेट लगा के दे दिया बारबेल पे, किसी को वेट्स ला के दे दिया ना, ऐसा. When you help do small favors, it is impossible that the other person will get mad at you because it is almost opposite. So smile and small favors, then you need not to spend a lot of time with them. You need not compromise with your time. ये दो चीज करेंगे ना, the other person will somewhere fall in love with you. So forget about you perceived as an arrogant person. This has worked for me. Perhaps it will help for you. And then trust will follow on.